नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करुचे आपन को कॉम्पिटिटिव लेंस को। तो गोटे नुआ इनिशिएटिव अनुसार दीपक सर मते कहले कि जे पिला मानकर बहुत डिमांड रहउची कि पूरा आर्टिकल्स ऊपर पूरा आर्टिकल्स ए पूरा 1 रो अप टू 465 बहुत सारा रिपेल्ड हेची तो 450 अराउंड अछि। ओके, तो मु सर को पचार कि सर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स करवा ना कंप्लीट डिटेल्स रे करिया। सर कहले कि जे पूरा डिटेल्स रे एक रु जेपर जते पर्यंत आर्टिकल्स अछि सब गुडा डिटेल्स रे विथ बीट बाय बीट एनालिसिस करिया लागि। ओके, तो सेति पई हमें रिकॉर्डिंग जीवा को चेष्टा कलु कि लाइव न आसी कि रिकॉर्डिंग सो दैट कि हम भल से डिस्कशन भी करि परिबा डिटेल्स रे एक रु पूरा कंप्लीट आर्टिकल्स। तो एटा दीटा पार्ट रखिबा। फर्स्ट पार्ट रे किछि आर्टिकल्स डिस्कशन करिवा एट द सेम टाइम सेकंड पार्ट रे भी किछि आर्टिकल्स हमें डिस्कशन करिवा। तो स्टार्ट करिवा आज रे सेशन को पूरा स्टार्ट करिवा पूरा भल से आर्टिकल रो सब गुडा को डिटेल्स रे कंप्लीटली वन बाय बीट सब डिस्कशन करिवा। ओके, तो जदि हमें फर्स्ट आर्टिकल देखिया देखंतु सेमिति आर्टिकल्स को एमिति पढिले भी पढि चलिबो बट जो माने एटा को रिवीजन पर्पस रखिबो। ओके, रिवीजन लास्ट मिनिट रिवीजन रे तमे आर्टिकल्स गुडा को शॉर्ट नोट करिवो। ओके, नेटफ्लिक्स वाले देखिबेन जेतल वीडियोस देखिबे। ओके, एटा लाइव जेतल जीवो कि यूट्यूब रे पढिबो सेतल अपन नेटफ्लिक्स देखिबेन पॉपकॉर्न खाइबे पेन एंड पेपर रखिबे। आ प्रति आर्टिकल रो जेहेतु लाइफ नाही प्रति आर्टिकल मु तुमको एक्सप्लेन करि साला परे अराउंड 10 to 15 सेकंड कोन कहबी पॉज देबी। जेते बेले कि अपन लाइव देखिबे सेते बेले नोट्स बनेबे एट द सेम टाइम ताको रिकॉल करियो चेष्टा करिवे। से 15-20 सेकंड भितरे मने रखियो चेष्टा करिवे। ओके, नेटफ्लिक्स पळे हमकु देखबार नाही। ओके, तो आज स्टार्ट करिवा ए आर्टिकल। स्टार्ट करिया पूर्व आ गोटे कथा कहू जेटा लास्ट मिनिट रिवीजन पय रखिबे बट जेते बेले अपन पॉलिटी पढु जने सब बेले चैप्टर वाइज पढियो चेष्टा करिवे। चैप्टर वाइज जेमति कि सपोज फंडामेंटल राइट हैला तो अपन 12 रो आर्टिकल रु पढिबे सेते बेले मन रखियो चेष्टा करथुवे जेतल पढिथिबे किंतु एथरा हमें भी स्टार्ट करिवा। ओके, तो वेलकम्स टू आवर ऑल आर्टिकल्स वर्ल्ड। ओके, आज स्टार्ट करिवा ऑल आर्टिकल्स वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करिवा कि देखा आपण पार्ट्स वाइज मन रखि परिबे। जेमति कि आपण कहिबे कि सपोज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तमरा आर्टिकल 1 to 4 भितरे मेंशन अछि। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन अछि? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ओके, कोन अछि? आर्टिकल 1 सेज नेम and territory of the union. ओके, हैंडराइटिंग एते भलो नुए। ओके, बियर करिवो। ओके, वॉइस तो क्लियर अछि तो बियर करि परतो आई थिंक। ओके, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन यदि हम आर्टिकल 1 रो सब क्लॉज 1 देखिबा। आर्टिकल 1 रो सब क्लॉज 1 कोन कहूची? इंडिया that is Bharat shall be union of states. India that is Bharat shall be the union of states. मन रखिबो एटी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कथा कहनी। इंडिया that is Bharat shall be the union of states, not the federation of the state. तो जदि देखिबा it is not federation. Even if term be federation, the term federation is not mentioned in the constitution. Constitution रे कोनोसी जगह रे फेडरेशन टर्म मेंशन हेनी। हां, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कोइतरा ऑल इंडिया फेडरेशन रहइबो। ओके, इन लेटर फेज रे हमें फेडरेशन सिस्टम हमर बहुत सारा फेडरल फीचर अछि किंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया इज नॉट ए फेडरल कंट्री। बुझेला? फेडरेशन टर्म हेनी। आमे फेडरेशन टर्म यूज काहे कलेनी सेते बेले कोन कहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे अंबेडकर साहब कोन कहले कि जे इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बिकॉज फेडरेशन माने होची फोइडस रो मीनिंग रो आसे सरी फेडरेशन मीनिंग होची फोइडस मीनिंग होची कोन जे एग्रीमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट्स इज नॉट एग्रीमेंट। ओके, दी प्रकार फेडरलिज्म तुम जानिथिबो। वन इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, अनदर वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म रे कोन छोटो छोटो स्टेट्स आसी कि मिसी कि गोटे यूनियन बनेबे ओ फेडरेशन बनेबे दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जोटा यूएसए कॉन्टेक्स्ट रे।
आमर कोन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म गोटे लार्ज कंट्री अछि ताको डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो डिफरेंट पर्पस हो आमे कोन करछे डिवीजन कन्वीनियंस पई करिछे दैट इज व्हाई वी आर हैविंग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म डिसइंटीग्रेट करी करछे आमे कोन कहले अंबेडकर साहब कोन कहले कि जे फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टेबल कोन कहले मन रखिबो फेडरेशन is union because it is indestructible ता माने कोन यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल आमे केबे भी यूनियन को भांगी परिबा नहीं बट हां स्टेट्स भांगी परिबा दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड indestructible union India is called indestructible union with destructible states आमे डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स को भांगी परिबा आर्टिकल 2 3 ने स्टेट्स को भांगी परिबा ओके सॉरी 3 ने आमे कोन करि परिबा स्टेट्स को भांगी परिबा किन यूनियन को भांगी परिबा नै आ गोटा कथा कोन कहले जे द states have no right to secede from the union or secede from the constitution or union कोइ परिबा ओके स्टेट्स राइट नै किसे भांगी जाई परिबो that is why India is called union not federation is that clear तो 10-5 सेकंड टाइम लियो आकु हजम करियो चेष्टा करो सेता सेकंड ओके सेकंड कोन कहला आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 रे कोन कहउची आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 रे कोन कहउची the states and territory को गुडा states and territory कोठेरे मेंशन अछि जो थरे कि तमरो शेड्यूल 1 ने मेंशन अछि शेड्यूल 1 ने जहा मेंशन अछि से गुडा होची कोन तमरो स्टेट्स एंड टेरिटरी बुझियला थर्ड कोन कहउची आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 कोन कहउची जे टेरिटरी को गुडा को ओके the territory of India shall comprise territory of India कहा को नहीं की ना states को second UT को third acquired territory बुझियला बट आर्टिकल 2 रे जो टेरिटरी तमरा ऐड करूचो फॉरेन टेरिटरी इज नॉट अंडर आर्टिकल 1 बुझियला तो जदि हमें पूरा ओवरव्यू देखिबा जदि आर्टिकल 1 न देखिबा आर्टिकल 1 कोन सिग्निफाइज करूची कोन स्पेसिफाई करूची आर्टिकल 1 जनरली स्पेसिफाई करूची कोन आर्टिकल 1 जनरली स्पेसिफाइज कोन ना फर्स्ट आर्टिकल सब क्लॉज 1 ने कोन कहला नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया ता माने कोन करूची ना नेम्स ऑफ द कंट्री को स्पेसिफाई करूची सेकंड कोन करूची ना सेकंड को कहूची को टाइप रो पॉलिटी अछि नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन माने इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिटी तो हमें फर्स्ट आर्टिकल नु कोन बुझिले फर्स्ट आर्टिकल स्पेसिफाइज और सिग्निफाइज that the name of the country and the type of polity we are having is that clear haba okay 5 सेकंड टाइम नियंतु जत्ते बेले नोट्स बनेबे ताकू 5 सेकंड ये देखि के आपण भल से बनेबे बुझियला ओके एबे जिबा में सेकंड आर्टिकल को फर्स्ट आर्टिकल डन आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 कौन कहूची एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कौन कहूची जे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कौन कहला ता एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स माने कौन ना पार्लियामेंट बाय लॉ
बाय लॉ माने मन रखियो बाय लॉ माने ऑलवेज सिंपल मेजॉरिटी बाय लॉ मींस ऑलवेज सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट बाय लॉ माने होची सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट कैन एडमिट or established new states from outside ओके आउटसाइड तमाने कोन आर्टिकल 2 रे तमे कोन से स्टेट को एस्टैब्लिश करि परिबो और एडमिट करि परिबो जोटा पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन नथिबो पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन जोटा नथिबो आर्टिकल 2 रे तमु एस्टैब्लिश करि परिबो आ एटा केमिति करिवो ना पार्लियामेंट करि परिबो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पावर नै इट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट बाय लॉ माने होची जोठी जो बुक्स रे भी बाय लॉ लिखाई बाय लॉ माने ओनली सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट करि परिबो एंड इट इज नॉट कंसीडर अंडर आर्टिकल 368 ओके ताहाले को आर्टिकल 368 रे ए अमेंडमेंट कंसीडर करा जीव नाही ओके जोटा सिंपल मेजॉरिटी रहउची ऑर्डिनरी मेजॉरिटी रे इट इज नॉट कंसीडर एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 बुझियला पर्यंत इज दैट क्लियर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओके तो एग्जांपल दे दई परिबो एग्जांपल दे परिबो सिक्किम पई आर्टिकल 2A थिला जोटा ऑलरेडी रिपेल्ड होई जाइछ ओके इज दैट क्लियर बुझियो सब एथरे तो एटा हला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स ओके क्लियर थर्ड आर्टिकल देखिबा ओके आर्टिकल 3 कोन कहूची फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स वर्ड आर्टिकल लैंग्वेज रे मीनिंग बुझबे ओके सेतरे थिला कोन एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन हियर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स केमिति करि परिबा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स केमिति करि परिबा जे बाय चेंजिंग द नेम चेंज करि परिबा सेकंड altering the boundaries केमिति बाउंड्री आइदर इंक्रीज और तमे करि परिबो डिमिनिश डिक्रीज हुए नहीं ओके डिक्रीज रे क्वांटिटी रे हुए ओके डिमिनिश आउ कोन करि परिबो बाय altering the areas ओके तो आर्टिकल 3 कोन कहूची जो स्टेट इंडियन यूनियन रे अछंती ऑलरेडी अछंती ओके तार जदी हमें कोनोसी नेम चेंज करूचे कि तार एरिया बढ़ाउचे कि डिमिनिश करूचे कि ता बाउंड्री चेंज करूचे कि तार एरिया चेंज करचे कि साइज चेंज करचे किछि भी करूचे एटा भी बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट हमें कोन करि परिबा तो बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट माने कोन इट इज आल्सो ए सिंपल मेजॉरिटी तो जदी ओवरऑली देखिबा आर्टिकल 2 are related to outside article 3 is related to domestic reorganization states ता माने कोन कहला जो आर्टिकल 2 रिलेटेड टू आउटसाइड जोटा ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन नाही बट ताको एडमिट करूचे हमें किंतु आर्टिकल 3 रे कोन इंडियन यूनियन रो पार्ट बड तारा ए सब चेंजेस करछे एरिया बाउंड्री नेम एक्सेट्रा सब करछे ए दीटा को भी तमरो सिंपल मेजॉरिटी रे हो दीटा को लॉ पार्लियामेंट द्वारा हो सिंपल मेजॉरिटी रे बट सेटा आउटसाइड एटा डोमेस्टिक जहा अछि ताको हमें रिऑर्गेनाइजेशन करूचे एग्जांपल जदी देखिबा
एग्जांपल जे देखिबा बहुत सारा चेंजेस ना होईची ना गुडा बहुत सारा चेंजेस होईची जेमति कि तेलंगाना भी 2000 तेलंगाना 2014 रे ला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रु बाहर के आसिला देन तमे बिहार रु झारखंड देन उत्तराखंड कोड आसिला उत्तर प्रदेश रु तो दीज आर डन बाय द आर्टिकल 3 ओके डन ओके नेक्स्ट आर्टिकल 4 देखिबा आर्टिकल 4 टा टिके भलसे बुझिया चेष्टा करिया आर्टिकल 4 ओके ए आर्टिकल 4 रे पिलांगर कंफ्यूजन रहे आर्टिकल 4 कोन कहूची आर्टिकल 4 कहूची लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 ओके आर्टिकल 2 and 3 एगुडा सबु शेड्यूल 1 and शेड्यूल 4 रे चेंजेस आनियो आ ए सबु शेड्यूल 1 and शेड्यूल 4 रे शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 रे ही अमेंड करिया ओके एग्जांपल आर्टिकल 2 रे हम कोन कले आर्टिकल 2 रे कोन कले ना किछि एरिया को आनी कोन कले सपोज हमें कोन कले एडमिट कले ओके तो एटा आर्टिकल 1 रे भी याला कारण टेरिटरी साइज बढ़िला ओके तो सॉरी आर्टिकल 1 को शेड्यूल 1 रे भी चेंजेस आसिला टेरिटरी बढ़िला 4 को केमिति अफेक्ट कला 4 इज रिलेटेड टू राज्यसभा तुम जानिचो शेड्यूल 4 इज रिलेटेड टू राज्यसभा जेतेले नुवा टेरिटरी ऐड करिचो ओके तो राज्यसभा को तुम रिप्रेजेंटेटिव दबो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अनुसार तो शेड्यूल 4 रे भी चेंजेस आनियो ओके तो ए दिनस कोन कहला कि आर्टिकल 4 सॉरी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू जदी अमेंड करूचो चेंजेस करूचो दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन और इंपैक्ट कोथरे बो अमेंडमेंट टू शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 ओके सिंपल मीनिंग आरेला सिंपल मीनिंग ओके तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन दैट इज इंडिया सॉरी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ओके तो देटा कांसेप्ट अछि मन रखिबो यूनियन आउट टेरिटरी यूनियन एंड टेरिटरी तो टेरिटरी मन रखिबो टेरिटरी ऑलवेज वाइडर than union territory is always wider than union okay territory रे तमर union ने कोन जीवो union consists of only states किंतु जदि territory concept देखिबा territory related to states भी जीवो ता दरे प्लस UTs जीवो प्लस acquired territory भी जीवो acquired territory भी जीवो ओके तो जेहेतु टेरिटरी रे तमर स्टेट्स जाउचे यूटीज जाउचे acquired territory जाउचे तो सेथि पई the concept of territory or the connotation of territory is always wider than the concept of union. The first part of Indian Constitution, we are done with first part of the Indian Constitution. बुझियला जदि बुझि जाइतिबो नोट्स बनेइबो ओके डन नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़िबा पार्ट 2 related to citizenship. Okay, part 2 related to citizenship. Article related to 6 to 11. तो गोटे गोटे आर्टिकल्स देखिबा देखो आर्टिकल 6 रे तमरा बहुत सारा क्राइटेरिया देइछि ओके सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन जेता एनाक्टमेंट हला सिटीजनशिप सेता डिफाइन नै नथला ओके कोन सिंज खाली कहितले कि सिटीजनशिप कोन रहिबो ओके बट केमिति एक्वायर करा जिवो एगुडा सब डिफाइन है नथला किछि भी डिफाइन है नथला तो एगुडा सब केबे आसिला ना दैट इज कांसेप्ट दैट इज अमेंडमेंट दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप एक्ट आसिला केबे सिटीजनशिप एक्ट 1955
ओके तो जनरली एथरो क्वेश्चन आसेनी सिटीजनशिप रु तमरा जनरली क्वेश्चन आसेनी आर्टिकल्स रिलेटेड रु बट एबे जेहेतु चली इश्यू तो सेति पई मे भी क्वेश्चन आसी पारे ओके तो सिटीजनशिप 6 रु 11 भीतर तमे मन रखिबो को बाउंड मन रखिबो ओके तो आर्टिकल 6 कोन कहूजे आर्टिकल 6 आर क्राइटेरिया दरकार नै आर्टिकल 6 कोन कहूजे आर्टिकल 6 कोन कहूजे ए पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया ए पर्सन domicile in India is regarded as a citizen. Okay, a person domicile in India is regarded as a citizen. जिते बेला either parents हुंतु और सी 5 वर्ष जदि कोन इंडिया रे रहिछि at the commencement of the constitution then he or she will be regarded as Indian citizen. A person domicile in India. खाली एति की मन रखिबे a person domicile in India is regarded as the citizen at the commencement of the constitution. बुझियला नेक्स्ट आर्टिकल 7 आर्टिकल 7 कोन कहूची a person migrated from Pakistan. A person migrated from the Pakistan will also be regarded as Indian citizen जदि गोटे स्पेसिफिक डेट मन रखिया दरकार नहीं आपनकर केबे भी एग्जाम रे डेट आसीबो नहीं ओके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बहुत सारा 2019 रे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसिलानी ओके तो स्पेसिफाई करिवो नहीं बट खाली मन रखिबो ए क्वेश्चन उडा तम सीक्वेंस पचार दबो सीक्वेंस जेमति कि 6 7 8 9 देथिबो आदरे एमटी मैच करियो दे दी थाय पारे आर्टिकल 7 कोन कहला ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान दैट ही विल आल्सो बी रिगार्डेड एज इंडियन सिटीजन ओके नेक्स्ट आर्टिकल 8 कोन कहूजे a person migrated to Pakistan एठी फ्रॉम कोइछि मन रखिबो migrated to Pakistan but later returned to India गोटे पर्सन जे कि migrated to Pakistan हेतिला but later he comes to or he returned to India is also regarded as citizen of India. Clear? Article sorry टिके भूल गला इठी खाली ना ये गुडा just a second 5 ରୁ 5 to 11 sorry 5 to 11 तो ये आर्टिकल गुडा खाली चेंजेस कर दो 5 6 हे जाए बेला बेला भूल हे जाए लाइफ रे भूल हुए आउ थरे कहि दूजी सुनो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सिटीजनशिप कांसेप्ट ओके खाली चेंजेस नंबर गुडा टे भूल जायतला आर्टिकल 5 रु 11 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप 5 रे कोन कहूची सिटीजनशिप डिफाइन एनी सिटीजनशिप एक्ट द्वारा 1955 रे आसला आगुर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी थिला आर्टिकल 5 रे कोन कहूची ए पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया ओके क्राइटेरिया अछि पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया इज रिगार्डेड एज इंडियन सिटीजन क्राइटेरिया ऑलरेडी तुम कहि सारी 6 रे कोन कहला ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इज आल्सो बी रिगार्डेड एज इंडियन सिटीजन क्राइटेरिया अछि बट क्राइटेरिया तम दरकार नै 7 कोन कहला ए पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया इज आल्सो रिगार्डेड एज इंडियन सिटीजन आर्टिकल 8 और आर्टिकल 8 कोन कहूची ए पर्सन ऑफ इंडियन origin but residing outside India a person of Indian origin but residing outside India तमे NRI concept कहि परिबो कोन पीपल्स ऑफ इंडियन origin ओके NRI
peoples of Indian origin, OCI card holders. So these are also included in Article 8 of Indian Constitution. Clear? Next, Article 9. Okay, कौन कहूचे? No person shall be regarded as Indian citizen if he or she voluntarily acquired the citizenship of foreign country. ओके, जदि सी कौनसी भी लोक जदि फॉरेन कंट्री रो सिटीजनशिप नहीं, सपोज वन पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया बट एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ पासपोर्ट अच्छी बट एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटिश, ओके, नहले कनाडा, ओके, देखि तो बॉलीवुड रे बहुत सारा ब्रिटिश सिटीजनशिप धरिक बसछन, एट द सेम टाइम कनाडा सिटीजनशिप धरिक बसछन, they will be not be regarded as the Indian citizen. Article 9 कहूछ, no person shall be regarded as Indian citizen if or he or voluntarily acquired the citizenship of foreign country. Is that clear? Article 9. Then Article 10. Okay, Article 9 को हजम करा गया. Article 9. Okay, next, Article 10 कौन कहूची? Citizen will continue his citizenship, his or her citizenship जेबे पर्यंत पार्लियामेंट लॉ बने, ओके, तो पार्लियामेंट जे पर्यंत लॉ बने से पर्यंत सिटीजनशिप कंटिन्यू करि परिबे. ओके, पार्लियामेंट जे पर्यंत. Next, Article 11. ए सिटीजनशिप केमिति एक्वायर करि हबो? सिटीजनशिप एक्वायर केमिति करि हबो? किए लॉ बनैबो? जे पार्लियामेंट will make law. ओके, त माने कहला जे सिटीजनशिप इसे यूनियन लिस्ट अंडर रे आसुचे आ पार्लियामेंट हे भी एक्सक्लूसिवली लॉ बनै परिबो, स्टेट लेजिस्लेचर कोनोसी भूमिका नाही. तो सेति पई कहितली जे सिटीजनशिप डिफाइन हे नतला कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम बेले, सेति पई पार्लियामेंट केम विथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो थरे डिफाइन हेतला तमरो सिटीजनशिप. आ आर्टिकल 11 कहूची कि जे पार्लियामेंट ही लॉ बनै परिबो सिटीजनशिप केमिति एक्विजिशन हे परिबो, जेमति कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एक्सेट्रा पांचटा वे रे तमरो सिटीजनशिप कोहै परिबो. मन रखो, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप केते वे रे? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप दैट इज 5 ways. ओके, केमिति रिमूव हे परिबो? दैट इज 3 ways. Okay, we are done with the concept or part 2 of Indian Constitution, that is citizenship. Okay, तो 30 सेकंड ब्रेक नियो, तो 30 सेकंड रे अपन हजम करंतु, जेतबे देखिबे सही अनुसार, जेतबे देखि सारिबे, सपोज देखि साइले तो 5 कोन, 6 कोन, 7 कोन, 8 कोन, 9 कोन, 10 कोन, 11 कोन आगु टिके मन रखिया को चेष्टा करिवे. डन. Okay, next part, that is part 3 of Indian Constitution, that is related to fundamental rights. Okay, fundamental rights. आगु magna carta
मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए, called as Magna Carta of Indian Constitution. Fundamental right plus DPSP is called conscience of the Constitution. Conscience of Constitution बहुत थर क्वेश्चन में पढ़ा है. Conscience of Constitution किए कोई थिले ना ग्रानविले ऑस्टिन. Granville Austin is called fundamental right and DPSP is called the conscience of the Constitution. Okay, तो बहुत सारा fundamental right also says rule of law not main. Okay, पचार दबो को part of Indian Constitution says that rule of law not the or government of law कोई परिबो rule of law or government of law is not government of main. Okay, तो एक कथा किए कोई थला तमरो fundamental rights. Okay, केते articles related article 12 to 35. Okay, 14 नुह it is 12 to 35. 12 to 35 that is related to तमरो कोन जे fundamental right. तो गोटे गोटे articles रे देखिबा. article 12 article 12 कोन कहूची, that is definition of states. Definition of states. Definition anu. Definition. NI. Okay. LTR रे sorry. TGT exam रे English रे पचार definition spelling वाला. Definition of the state. NITION. Definition of states. Definition of states. अच्छा. आमे कहा को state बोलना कोई बा. Odisha is not state आमे कोई परिवानी. Okay. Odisha को state आमे इम्ति कोई परिवानी. हाँ. Odisha is also a state. Okay. Even if local self government is also a state. Okay, LIC is also a state. Even if SBI is also a state. SBI is also a state. But BCCI is not a state. Some statutory bodies are not a state. BCCI, mano rakhiyo, BCCI is not a state. BCCI is not a state. Okay, seti pai tam RT Act tadre prevail korani. RT Act tame pakai paribani BCCI upare. Okay, BCCI is not a state. But SBI is a state, LIC is a state, local self government is a state, parliament is a state, legislature is a state, executive is a state. Okay, these are the part of the states and it is comes under the definition of state. ताला में states कहाँ को कोई बा? तो states है या को कोई बा? जहाँ 4 elements अच्छे, चारिटा elements अच्छे, चारिटा elements कौन कौन? ना जहाँ territory भाई अच्छे, second जहाँ गवर्नमेंट अच्छी, जार सॉवरेनिटी अच्छी और जार पॉपुलेशन अच्छी, जार पॉपुलेशन अच्छी. तो ताकू आमे कोन कहिबा स्टेट बोलना कहिबा. तो याकू जदी कंसीडर करिबा ताले किए जीवो, इट इज पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सेही बळा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट रे कोन state legislative assembly, sorry, legislature and executive. Then तमर local self government that is PRI तमे कोई परिबो, municipalities भी कोई परिबो. Okay, even if other bodies performing state function. Okay, state function रे under रे काम करूचनी, it is also regarded as state. But एटी exception कोन रखिबो? एक्सेप्शन ता मन रखिया को चेष्टा करिवो. एक्सेप्शन कोन? एक्सेप्शन जुडिशियरी is not a part of state. Judiciary is not a part of state. Judiciary is not a part of a state under Article 12 of Indian Constitution. जो definition of Indian Constitution sorry state अच्छी Article 12 रे से concept रे judiciary is not a part of state. But administration of judiciary रे जो कार्य करा जाउचे administration of judiciary is a part of state. ताले state रे किए गला state रे elements कहली जो जहाँ पाखरे चारिटा elements थिबो territory, government, sovereignty and population are called as state or comes under definition of state. ताले देखिबा किए जाउचनी जे पार्लियामेंट रे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जाउचनी, स्टेट रे भी सेम, इवन इफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पीआरआई एक्सेट्रा, इवन इफ अदर बॉडी जो माने गवर्नमेंट रे फंक्शन करूचनी और कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट.
but the concept of judiciary is not comes under the definition of state, is not a part of state, but judiciary is a part of government but not a part of the state. It is an organ of the government but not the part of the state. But administration of justice, administration of judiciary is a part of state. जेमती कि तमरा appointment होउचनी etc होउचनी etc, all are part of state, but justice or judiciary is not a part of state. ओके आठ गोटे एक्सेप्शन एटा मन रखिबो. एट द सेम टाइम एग्जांपल्स रे तमे कहबो कि बीसीसीआई इज आल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट, जोटा कि आरटीआई तमे फाइल करि परिबोनी बीसीसीआई रे. इज दैट क्लियर? आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 डन. आई थिंक आर्टिकल 12 डन. ओके 10 सेकंड टाइम नियो. Done. Okay. Next, Article 13. Article 13. Article 13 कौन कौन भाई? Okay, dangerous article. Okay, judiciary कथा. हाँ. Article 13 कौन? The all laws that are inconsistent with or in derogation with fundamental right shall be declared as null, void or unconstitutional by the judiciary through a doctrine called judicial review. Okay, तो आर्टिकल 13 कौन कहूची? जो लॉ all laws that are inconsistent with or in derogation with fundamental right shall be declared as void, null or unconstitutional through judiciary or by judiciary through a doctrine or under a doctrine or a wide a doctrine. Under word को न लिखि कि तमे wide भी लिखि परिबो. Under होची wide a doctrine called judicial review. जो कोनसी लॉ यदि तुम फंडामेंटल राइट अगेंस्ट जाउची ताहाले सेठी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देई पड़िबो, बिकॉज द जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट इज देयर. जुडिशियल रिव्यू रे से माने कोन करिवे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड और नल डिक्लेयर करिवे. तो आर भी तीन चारटा पार्ट अछि, अराउंड चारिटा पार्ट अछि. तो देखिबा आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 कोन कहूची जे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल आर जदि केसेस वाइज पढ़िबो भाई आर्टिकल 13 भी 5 घंटा नहीं जो. ओके, सुप्रीम कोर्ट रो डिफरेंट जजमेंट, डिफरेंट डॉक्ट्रिन. ओके, केमिति डॉक्ट्रिन सपोज को पार्ट वायोलेशन करूची कोटा करूनी आकु जदि हम डिटेल्स रे पढ़िया 5 घंटा नहीं जो. ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट एटा तमरो एग्जाम रे इते आसीबो. ओके, 5 घंटा नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू बी अपियर लॉ एग्जाम. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गिव ओजेएस एग्जाम. ओके, यदि सेमी देखिबो ताल 5 घंटा उडा नबो. बट जेति कि तम एग्जाम रिलेटेड मोर देन एग्जाम रिलेटेड एथर तमरो 300 अछि. इवन इफ तमरो सिविल सर्विस रे भी काम दे दबो जे तम दउथबो. ओके, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 को कहू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ त माने को कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट हबा पूर्वरु जो लॉ अछि. ओके, तो से कथा कहू कोन जे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 कोन कहू सब क्लॉज 1 ने कहू जे कौन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होइछि और एनैक्टमेंट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूर्वरु जो लॉ अछि ता केस हबो कोन. सपोज 1945 मसिया रे मोटा लॉ बनैछि, से लॉ टा हमर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करछि. ओके, ता माने कोन से फंडामेंटल राइट को पूरा से लॉ टा को पूरा ड्रॉप कर दवा ना. जुडिशियरी केम विथ ए डॉक्ट्रिन कॉल्ड गोटे डॉक्ट्रिन जेमति डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बहुत सारा डॉक्ट्रिन का पाखरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जुडिशियरी इनोवेट करी छी. ओके, जेनी डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन,
डॉक्ट्रिन ऑफ टॉलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंसेस, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ बहुत सारा अच्छी, बहुत सारा डॉक्ट्रिन अच्छी, ओके। तुम जो डॉक्ट्रिन जो दरकार मु तुमको कहबी। एटी कोन कहै कि जदि कोन से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सपोज देयर इज दिस इज ए काइंड ऑफ लॉ, ओके, जोटा कि 1945 मसिया रे कोन हितला ना लॉ तैयारी हितला और लॉ एनैक्टमेंट हितला। this part of the law, suppose this part of law is affecting fundamental right, okay, suppose this part of law is affecting your fundamental right, this part is valid, this part is not, this part is valid। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अनुसार कौन कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट हला पर कौन कहला जो लॉ तुम फंडामेंटल राइट को वायलेशन करिवो ताकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जिवो, ताकू वॉइड डिक्लेयर करा जिवो, ताकू नल डिक्लेयर करा जिवो। किनु देखला बेलकु ये तो पार्ट ऑफ लॉ, एटी पार्ट ऑफ लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सपोज एटा पार्ट ऑफ लॉ कौन करूची जे तुम फंडामेंटल राइट को वायलेशन करूची, ता माने कोई पूरा टोटल डाउ ड्रॉप कर दवा नहीं। जुडिशियरी केम विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ, जुडिशियरी केम विथ ए डॉक्ट्रिन कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और तुम ताकू कहि परिबो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, ओके। देखो डीप रे जीवो जदी एई सब कांसेप्ट गुडा पढिबो, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी कोन कहूची, ये कहूची कि जो पार्ट सुप्रीम कोर्ट ए डॉक्ट्रिन कोन कहउछनी जो पार्ट तमर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करूची सेही पार्ट टाको ड्रॉप कर दियो, ड्रॉप दिस पार्ट ओनली, ड्रॉप दिस पार्ट, ड्रॉप कर देला कोन अछि तमर तो फंडामेंटल राइट वायलेशन होउनी, जो पार्ट ऑफ द लॉ रो गोटे पार्ट वायलेशन करजे से पार्ट टाको ड्रॉप कर दियो, पार्ट टाको ड्रॉप कर देले डन, ओके। आधर भी बहुत सारा एक्सेप्शन दे, जस्ट ए सेकंड, गोटे सेकंड, जस्ट गोटे इंपोर्टेंट ओके ठीक है, ओके। से कौन कहला जो पार्ट ऑफ वायलेशन करछि से पार्ट ऑफ ही ड्रॉप कर दियो, किंतु अनदर एक्सेप्शन इज देयर, सपोज गोटे लॉ बनैछे ताथरे 95% कोन करूछि 95% वायलेशन करछि हमरो से लॉ रो 95% पार्ट तमर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करछि, कोन हबो 5% को धरि के बसिबा कि ना पूरा सेटी सेटी टोटली ड्रॉप कर दबा, ओके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी बहुत सारा अच्छे, ये तमरा डीप दरकार नहीं। आर्टिकल 13 पार्ट 2 और सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 कोन कहूची सब क्लॉज कोन कहूची 2 दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट ता माने कोन जेबे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट है सला इंप्लीमेंट है सला ता परे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 कोन कहूची जे द डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ कोन कहूचे जे लॉ कथा में जो कहूचे हम आर्टिकल 13 ने कहूचे ऑल लॉज, एटा को लॉ भाई को लॉ, लॉ तो बहुत प्रकार अछि, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अछि, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ अछि, स्टैट्यूटरी लॉ अछि, बाय लॉज अछि, ऑर्डिनेंस लॉ अछि, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लॉ अछि जोटा को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लॉ को, ताले को लॉ इवन इफ कस्टमरी लॉ अछि, ट्रेडिशनल लॉ अछि, ओके। कस्टमरी तम सोसाइटी रे बहुत सारा लॉ प्रिवेल करथुवा जति कि खाप पंचायत, ओके, खाप पंचायत रे भी गोटे लॉ अछि, ओके। तो बहुत सारा तमर कस्टमरी लॉ अछि, इवन इफ ट्राइबल पीपल कर भी लॉ अछि, ताले एटा को लॉ, एटा को लॉ, तो एठी से कोन कहला ऑल लॉज, ओके। तो सेटा कस्टमरी लॉ हबो, तमर बाय लॉज हबो, रूल्स हबो, रेगुलेशन हबो, इवन इफ तम कस्टमरी लॉ, ट्रेडिशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल लॉज, डेफिनेशन अंडर ऑल लॉज आसीबो। नेक्स्ट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 कोन कहला
it will be not considered as, it will not considered as, एटा जो चेंजेस करूछ not consider as amendment under article 368 of Indian Constitution. ए जो लॉ गुडा तमे चेंजेस करूछ ये करूछ जोटा तमर वायलेशन करूछ, it will be not considered as, it will be not considered as कोन जे amendment under article 368. Is that clear? Let's take 10 to 15 minutes, revise the concept. जते आप नोट्स बनाउछन एई वे नोट्स बनांदो. हां जे भी नोट्स बनेबे, ओके जे भी नोट्स बनेबे, ओके नोट्स ता बनेबे, नोट्स बनै की you can send to the दीपक सर. ओके जे प्रॉपर फॉर्मेट रे नोट्स बनै की दीपक सर को कोन करिवो पीडीएफ बनै की पठेइबो. ओके he or she will be definitely get a gift from me. ओके मु डेफिनेटली ता गोटे गिफ्ट देबी. ओके कारण एटा तो मो पाखर भी रहि जिवो आपण माने पठेले. ओके कारण एटा मो पाखर तो किछ रिटर्न ये नाही जहा मु एक्सक्लूसिव मन रखी जे एट द सेम टाइम पढी पढी की जति की पढी छी थ्रू आउट पीरियड रे मु तुमको कहू छी. ओके नोट्स बनेले मो पाखर रहबो सो दैट डेफिनेटली आपन गिफ्ट्स मिलिबो. ओके डन. आर्टिकल 13 डन. आर्टिकल 13 डन. नेक्स्ट एबे आसले आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 it is comes under the right to equality. Right to equality. Right to equality. There are two parts, that is equality before law. Okay, equality before law, you can say EBL. Then equal protection of law. Equality before law and equal protection of law, or EPL. EPL. Equality before law and equal protection of law. Done. Equality before law माने कौन? Equality before law, it comes from a concept called rule of law. Rule of law. Okay, rule of law ru it is a part of rule of law जोटा कि तमरो यूके रे प्रिवेल करूचे. रूल ऑफ लॉ इज गिवन बाय एवी डाइसी प्रोफेसर. यू कैन से प्रोफेसर एवी डाइसी. प्रोफेसर एवी डाइसी gave the concept called rule of law. Okay, rule of law ru तमरो इज ए पार्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. Okay, there are three parts in the rule of law. Okay, but here हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ पर कंसंट्रेट करिवा. अच्छा, रूल ऑफ लॉ एविडेंस जो देथिले इट इज ए पार्ट. इक्वालिटी बिफोर लॉ कोन कहूची जे लॉ आखिया गरे समस्त समान. लॉ आखिया गरे समस्त समान. ऑल द पर्सन will be subjected to equal law. ओके समस्त को ऑर्डिनरी लॉ आगरे करिया दरकार. ओके तो इट इज ए यूके कांसेप्ट. इट इज ए यूके कांसेप्ट. अच्छा से कहूची कि लॉ आखिया गरे यदि समस्त समान ताहाले भी बहुत सारा कौन अच्छे डिस्क्रिमिनेशन भी होचे ये करा जाउचे. ताहाले इट इज ए नेगेटिव कांसेप्ट. इट इज ए नेगेटिव कांसेप्ट. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रे कोन कहूचे? इक्वल प्रोटेक्शन कहूची जे लाइक शुड बी ट्रीटेड alike. Like should be treated alike. Like should be treated alike. ता माने कोन कहला जो समान सर्कमस्टेंसेस रे अछ, समान सर्कमस्टेंसेस रे अछ सर, समान सर्कमस्टेंसेस रे जदी अछ ताहाले तुमको इक्वल ट्रीट करा दियो. ओके सपोज कोन से गोटा पेनाल्टी दिया गला. पेनाल्टी सपोज दिया गला. पेनाल्टी जने बहुत रिच पर्सन अछि ताकू जदी 5 लाख को आजो से फोपाड़ दवा रे भाई 5 लाख कोन अछि. बट गोटे गरीब श्रेणी रो लोक अछि ताकू 5 लाख कहले कोन हो से ताके हार्ट अटैक ए मर जिवो. ओके तो जति इक्वल सर्कमस्टेंसेस नाहंती ताहाले इक्वल ट्रीटमेंट दे हबो नाही. ओके तो सेति पई कहला लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. तो लाइक जेते इक्वल जदी ट्रीट करछो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस दी जनकर सेम लेवल हवा दरकार. तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. इट इज
positive concept. It is positive concept. Okay, eta kahara? It is USA concept. Done. Clear? Done. Equality before law and equal protection of law. I think clear hai jaithibo. Equality before law and equal protection of law. Done. Okay, 10 सेकंड टाइम नियंतु. ओके, यदि केबे क्वेश्चन पचारे सोर्सेस पचारिबो, सोर्सेस ऑफ, यदि केबे पचारे क्वेश्चन पचारे सोर्सेस ऑफ आर्टिकल 14, सोर्सेस ऑफ आर्टिकल, इट इज अमेरिका एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. मन रखियो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो गिव मी 13 सेकंड और 40 सेकंड. Let me drink some water. Okay. Next, Article 15. Article 15. आयुष्मान खुराना. आयुष्मान खुराना. ओके, ठीक है. आर्टिकल 15 कौन कहूँ? जे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the ground of कोगुड़ा religion, race, caste, sex or place of birth only is very dangerous word. मु सब बेले कहे only, I am only yours. Okay, I am only yours, very dangerous. Okay, तो only word is extreme. Okay, कौन सी क्वेश्चन ने only देखियो माने ताऊ दिथर पड़िबो. आ जे तुमको कहबो only भी कहबो I am only yours, you are only mine. Okay, ताकू भी आउथरे टे सुनिया चेष्टा करिवो. Okay, you should कोन the hidden meaning तार बुझियो चेष्टा करिवो. Okay, only is very dangerous, extreme, bold. Okay, तो कौन कहला आर्टिकल 15 ने prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. ओके, रेस कौन? रेस तमर बायोलॉजिकल. ओके, कास्ट कौन? इट इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट. कास्ट इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट. सेक्स इज आल्सो ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. एगुडा तुम सब क्लासेस रे भी कहितली. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड कौन जेंडर. ओके, कास्ट एगुडा सब, रेस, कास्ट एगुडा सब तुमको कहितली. ओके, प्लेस ऑफ बर्थ. तो आर्टिकल 51 ने कौन कहूची? द 51 ने कौन कहूची? आर्टिकल 51 1 रे कहबा 51 सब क्लॉज 1. 51 सब क्लॉज 1 कौन कहला? 51 सब क्लॉज 1 ने कौन कहूची? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शैल नॉट discriminate on the grounds above only. ओके, एई ग्राउंड रे तमरो कोन करि परिबो? डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही. को ग्राउंड रे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 सेम. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कोन कहूची? ओके, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कोन कहूची ना कोनोसी पर्सन को नो पर्सन discriminated on the above grounds कहा को तमे शॉप को मना करे परिबोनी. शॉप नहीं नहीं भाई तू डिस्क्रिमिनेट रेस रे तो मो शॉप को एस परिबोनी. कोनोसी रेस्टोरेंट को, कोनोसी होटल को, कोनोसी बाथिंग घाट, you cannot discriminate on the above ground to these places. बुझियला?
देन नेक्स्ट आर्टिकल 15 सब क्लास 3 कौन कहूँ आर्टिकल 15 सब क्लास 3 आम रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ कहले ओनली किंतु स्टेट चाहिए स्टेट स्टेट कैन मेक लॉज फॉर वुमेन रिजर्वेशन भी करि परिबो वुमेन मानक पई स्पेशल पे करि परिबो हां डिस्क्रिमिनेट होउची एटा डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 सब क्लास 3 कोन कहूची जे वुमेन मानक पई स्टेट लॉ बनै परिबो वुमेन मानक पई स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन करि परिबो हां इट इज आल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ओके ओके इट इज एक्सेप्शन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ओके तमे जदी 8 भी करिवो 8 जदी करिवो आर्टिकल आर्टिकल एक्चुअली मु जत पढाई तम आर्टिकल 8 रे आर्टिकल 14 ने तमर एक्सेप्शन गुडा मु तम पढाई दिए एक्सेप्शन गुडा एक्सेप्शन जदी आर्टिकल 361 कोन आर्टिकल 361 ए कोन ओके आर्टिकल 361 ए कोन 361 ए कोन जे तम कहि परिबो आर्टिकल 105 कोन 8 एक्चुअली एक्सेप्शन गुडा पळाई ओके आर्टिकल 194 कोन 8 एक्सेप्शन गुडा तमर पळाई किंतु सीक्वेंस रे जाउचे त सेति पय कोन फिर भी हम कहि देबी ओके फिर भी हम कहि देबी सीक्वेंस ता हेडा कहि देबी कारण से कनेक्टेड करिक मन रखले इजीली मन रहि जिवो त आर्टिकल 15 सब क्लास 3 कोन कहूजे वुमेन मानक पय रिजर्वेशन करि परिबो बुझियला ओके 4 5 एते इंपोर्टेंट नहीं डन डन 30 सेकंड ओके नेक्स्ट आर्टिकल 15 डन आर्टिकल 15 सब प्लस 4 5 एते इंपोर्टेंट नहीं यू कैन स्किप आल्सो अच्छा 8 देखि दबा 14 रा एक्सेप्शन आर्टिकल 14 एक्सेप्शन एक्सेप्शन ता 8 देखि दबा आर्टिकल 361 कोन कहूचे immunity to president and governor immunity to president and governor immunity to president and governor okay immunity to president and governor कौन कहला जे president against रे no criminal proceedings कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट अगेंस्ट रे करि परिबो नाही नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग हिज ऑफिस ऑफ टेन्योर ऑफिस पीरियड टाइम बेले ओके ऑफिस टाइम बेले और ऑफिस रे जे पर्यंत से अछंदी से पर्यंत तमे कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करि परिबो नाही ओके बट सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड civil proceedings can be initiated by after giving 2 months okay civil proceeding can be initiated is that clear next article 361 done एथरा में कनेक्ट कर दले आर्टिकल 361 ए कोन कहूची आर्टिकल 361 ने कोन कहूची जदी के कोनोसी पब्लिश करूची नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर publishing true and fact in TV and radio or newspaper कौन सी लोक को तमे प्रोसिक्यूटेड करि परिबनी जदी कौन सी से फैक्ट ट्रू आउ कोन इवेंट एक्चुअली सत घटना जदी से टीवी रेडियो आउ कोन न्यूज़पेपर रे पब्लिश करूची कि देखौची ताले तमे कोन करि परिबो जे अरेस्ट की प्रोसिक्यूटेड करि परिबो नाही नेक्स्ट आर्टिकल 105
privileges to MPs आर्टिकल 105 रे कोन देछि ना प्रिविलेजेस टू एमपीज देखो इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रे केमिति तमर एक्सेप्शन आसुछि ओके एक्सेप्शन 105 एमपीज माने किछि भी से पार्लियामेंट फ्लोर रे कहि परिबे दे कैन वोट अगेंस्ट दे कैन वोट इन फेवर कोन से डिबेट रे भाग नै परिबे किछि भी कहि परिबे ओके बट इट शुड बी विद इन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज हवा दरकार पार्लियामेंटरी लैंग्वेज रे से किछि भी कहि परिबे ओके कोथरे ना आर्टिकल 105 रे हम तुम कहितली जेतले एग्जीक्यूटिव कथा आसुची कि यूनियन कथा आसुची तमे सेते बेले सेंटर प्लस 89 रे ऐड कर दबो तमरा स्टेट्स पळे आसीओ ओके बहुत सारा क्षेत्र रे जाय बट इट इज एक्सेप्शन आर नॉट रूल्स मन रखियो इट इज एक्सेप्शन ओके इट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर बट इट इज नॉट अ रूल टू रिमेंबर ओके इट इज एक्सेप्शन बट एक्सेप्शन आर नॉट रूल्स ओके तो सेंटर प्लस 89 105 है प्लस 89 इक्वल टू 194 आ 194 को दे कहा को देछि ना एमएलए मानु को देछि एमएलसी मानु को देछि से कोन एमएलएस और एमएलसी मानु को देछि से कोन जे किछि भी स्टेट लेजिस्लेचर 4 रे कहि परिबे फ्लोर रे कहि परिबे तो एठी दीटा डन हे गला ए दीटा डन देखिबा 10 सेकंड टाइम नियंतु 10 सेकंड आर्टिकल 15 जगह पे जाइछे 10 सेकंड टाइम नियंतु 10 सेकंड रे नेक्स्ट को जिबा ओके नेक्स्ट पंद्रह जाइए 16 आर्टिकल 16 equality of opportunity in the matters of public employment okay in the matters of public employment equality of opportunity in the matters of public employment article 16 ने कहूची कि equality of opportunity in the matters of public employment ओके एटा कोन कहला आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 कोन कहूची ना कोनोसी लोक को तमे कोनोसी लोक को रिलीजन रेस कास्ट सेक्स आ कोन डिसेंट ये रे तमे कोन करि परिबो जे डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही ओके डाकुजी लेखंतु no citizen shall be discriminated on the ground of religion race caste sex religion race caste sex descent place of birth and residence ओके तमे एक ग्राउंड रे कोन करिवो ताकू डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही ओके डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही ता माने कोन कहला प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस रे रेसिडेंस रे हम डिस्क्रिमिनेट करि परिबानी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 कहूचे किंतु
residence can be become the criteria कौन for the public employment जेमती आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करूचे ओके सपोज ओडिशा गवर्नमेंट जदि आनिबो ओके रेसिडेंस क्राइटेरिया तो एटा को किए लॉ बने परिबो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 रे कहूचे जे पार्लियामेंट कैन मेक लॉ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ प्रोवाइड रेसिडेंस as criteria for public employment article 16 सब क्लास 3 रे कहूची कि जे पार्लियामेंट लॉ बने परिबो कोन नै परिले ओके नोट्स कर दियो ठीक है साइड होचे क्लियर नेक्स्ट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कौन कहूचे ना स्टेट कैन मेक लॉ फॉर backward classes which are not adequately represented in service okay जो community जो classes adequately represented in service नाहंती तांको पाई state law बने परिबा तांको रिजर्वेशन पाई एग्जांपल जे देखिया ओडिसा रे एससीबीसी ओके सोशल एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस ओके एससीबीसी पाई जो माने जदी adequately represented नाहंती गवर्नमेंट ऑफिशियल ले और गवर्नमेंट पर्सनल ले गवर्नमेंट सर्विस रे से माने adequately नाहंती then state can make law okay note down it next note down it first okay 16 here article 16 subclause a sorry subclause 4a 4a कौन कहूची it is promotion related to promotion in reservation next article 16 subclause 4b here related to backlog vacancies suppose कौन सी वैकेंसीज आसी बट सेटा फिल अप होई पानी सपोज रिजर्वेशन पाई फिल अप हेनी ओके सपोज सेटा बैकलॉग रह जाई तो नेक्स्ट ईयर जेतला आसीबो ताकू कोन कैरी फॉरवर्ड रूल ओके तो सेतरे आसीबो जेतले तो रिजर्वेशन इशू आसी पारे सपोज एससी एसटी पाई किछि पोस्ट थिला जेमने हाई कोर्ट एसो बहुत सारा करूची स्पेशल ड्राइव तांको पाई करूची स्पेशल ड्राइव एग्जाम ओके सपोज सेटा फिल अप होई पाइलानी जदी फिल अप न होई पाला कोन बताले जदी फिल अप न होइला तले कोन करा जीवो ना सेटा कैरी फॉरवर्ड रूल रहिबो आउ कैप लागिबोनी तो के सेपरेट ए भलिया आसीबो ओके तो सेट रिजर्वेशन सिस्टम अलाउ होना इज दैट क्लियर डन आर्टिकल 16 डन okay next article 17 article 17 कौन कहूचे जे abolition of untouchability and prohibition of its practices okay abolition of untouchability and prohibition of its practices okay केते समय हे गलानी घंटा 10 मिनिट हे गलानी आ चालू ओके धैर्य धरि की देखिबो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा आर्टिकल्स हमरे इतरे क्लियर हे जो ओके
तो अराउंड 2.5 आवर टू 3 आवर जीवा हमें ओके धीरे धीरे पढ़िबा डिटेल्स रे पढ़िबा डोंट वरी आर्टिकल 17 कहूची अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस देखियो बहुत सारा क्वेश्चन ने प्रोहिबिशन न लिखी कि एनकरेजमेंट ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस लिखी दे तो से स्टेटमेंट भूल हबो ओके जेतल तो मैच करियो देथिबो व्हिच ऑफ द आर्टिकल चारिटा ऑप्शन दे देथिबो कोटा कोन कर जे करेक्टली मैच कर जे उटे भल से पड़ियो खाली अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देखि कि डेई पड़ियोन सेठी ओके ठीक मार दबनी सेठी प्रोहिबिशन लिखाई छी कि एनफोर्समेंट लिखाई छी ओके प्रोहिबिशन लिखाई दे करेक्ट हबो एनफोर्समेंट लिखाई दे भूल हबो तमन चाहू जे तुम प्रमोट करू जो अनटचेबिलिटी ना मन रखिबो आर्टिकल 17 ने कोन दे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस ओके इट इज अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन it is a social discrimination okay it is a social discrimination but constitution रे कोनोसी जगह रे term untouchability बोलना कोनोसी जगह रे डिफाइन है okay untouchability बोलना कोनोसी जगह रे the term untouchability has not been defined anywhere in the constitution रे कोनोसी जगह रे term untouchability define है ही नहीं कौन सी जगह रहने अच्छा को तरह डिफाइन है जी इट इज अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इट इज रिटन इन द सिविल प्रोटेक्शन राइट प्रोटेक्शन ऑफ इन लिखो प्रोटेक्शन ऑफ जस्ट अ सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 जोटा को चेंजेस करा देतला केबे 1976 रे एतिकी मन रखो एतिकी मोर देन सफिशिएंट more than sufficient more than sufficient okay done next article 18 okay कौन कहूँ article 18 subclause 1 abolition of titles except military and academic okay abolition of titles except military and academics abolition of title except military and academics okay you cannot take the titles like Maharaj, Rajadhiraj, Chhual Singh, Chhotrai okay Maharaja Dhiraj okay you cannot take this kind of titles that is abolition of title except military and academics you can take the titles like lieutenant colonel lieutenant okay these are the military titles academic titles like professor phd doctorate you cannot because it is your hard earned titles you can take okay but a titles तमे नहीं परिबनी कोतरे राजा धीराज महाराज okay आ पई गोटे केसेस भी चलीतला okay 1954 रे जेतरे तमरो नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न पद्म विभूषण एंड पद्मश्री आ पई भी केस चलीतला and then Supreme Court in 1996 says Supreme Court says these are not the titles okay national awards are not the titles which comes under article 18 titles no okay eta titles no okay and you cannot use the suffix and prefixes रे तमे भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री लगेई परिबो नाही जोटा कि आर्टिकल सॉरी सुप्रीम कोर्ट 1996 रे कहले it is not a part of article 18 it is not a violation of article 18 so it can be continue okay 1996 बुझियला article 18 subclause 1 okay subclause 2 कोन कहूचे subclause 2 article 18 subclause 2 no citizen can take titles or acquire koi paribo take titles from foreign state okay if you are an Indian citizen you cannot take the titles of England okay UK USA you cannot take the
title from there. Done. Article 18 subclass 3. Article 18 subclass 3 कौन कहूँ जे no person working in India आइदर सी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे काम करू कि गवर्नमेंट रे काम करू कि कोनोसी जगह रे काम करू कैन नॉट टेक टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी फॉरेन कंट्री without the consent of प्रेसिडेंट रो कंसेंट बिना तमे कोनोसी कंट्री रु कोनोसी फॉरेन कंट्री रु तमे कोन जे टाइटल्स एक्सेप्ट करि परिबो नै कि टेक करि परिबो नै जे पर्यंत प्रेसिडेंट तुमको अनुमति देई नांती जदी तमे कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन ये रे काम करू जो कोन इंडिया रे ओके नोट इट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल 18 subclass 4 article 18 subclass 4 article 18 subclass 4 कौन कहूँ जे no person working in India in office of profit can take emoluments allowance from anyone without president permission जो लोक जदि कौन सी इंडिया रे से काम करूची तुम विदाउट प्रेसिडेंट र परमिशन रे ओके जे तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे काम करूछ ताहाले कौन सी एमोलमेंट्स अलाउंस तमे काहा ठारू गिफ्ट्स एमोलमेंट अलाउंस गिफ्ट्स ओके तमे काहा ठारू कोन एक्सेप्ट करि परिबो नाही तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल दिस एक्सेप्शन दीज आर आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 फंडामेंटल राइट इज दैट क्लियर ओके take 10 minutes 10 seconds note it down नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 19 ओके कौन कहूँ जो प्रोटेक्शन ऑफ certain rights that is article 19 subclause A कौन कहूँ सबक्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 सबक्लॉज P फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 सबक्लॉज B assembly peacefully without arms एटा टिके भल से देखिबो विदाउट लिखाई छी कि विथ लिखाई छी ओके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 19 सबक्लॉज A 19 B assembly or right to assembly peacefully without arms okay C you can make association or union or cooperative society is right now in 43B through 97th constitution amendment 2011 मन रखियो क्वेश्चन पर ओके फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन
तो ये गोटे एक्सेप्शन मन रखिबा एट exception right to form association is also a fundamental right not to form is also a fundamental right suppose तमे गोटे एसोसिएशन बनई परिबो जेंति आईपीएस एसोसिएशन ओएस एसोसिएशन ओके टीचर्स मानकर भी एसोसिएशन अछि राइट टू फॉर्म इज एसोसिएशन इज योर फंडामेंटल राइट नो डाउट लेबर यूनियन ओके एक फार्मर यूनियन बहुत सारा यूनियन अछि तमे बनई परिबो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट फॉर्म एसोसिएशन रे जोडी होबा भी तमर फंडामेंटल राइट किंतु किंतु माने कौन एसोसिएशन न जोड़ी हो भी इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट तुमको कहीं भी अटकई परिबेनी ओके के भी बाध्य करि परिबेनी को एसोसिएशन आ गोटे कथा मन रखिबो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लास 3 बट राइट टू मन रखिबो इटा राइट टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टेट is not a fundamental right तमाने कहला जे right to form association is a fundamental right to get associated with association or union or cooperative society is also a fundamental right to not participate right to not associate any association union or cooperative society is also a fundamental right but right to get recognition तम association को recognition state दबो is not a fundamental right जेमिति कि राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स इज ए फंडामेंटल राइट बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एट एक्सेप्शन लिखि परिबो राइट टू स्ट्राइक बी रे लिखि परिबो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट क्लियर ओके नेक्स्ट 19 डी move right to move throughout territory of India right to move throughout territory of India थंडा दिन ओके तंटी सुखी जाऊ तो ते पानी पी दवा ओके जस्ट अ सेकंड because I'm recording this video at very early morning okay morning ru start करूची on Sunday okay तो ठंडा टिके ठंडी सुख जाछ नो इशू okay throughout move territory of India okay move through territory ता माने को inside the country okay inside country you can move throughout the territory of India ता माने मन इच्छा जुआडे बुली परिबो no fundamental right is not permanent it is not absolute तुम जानि छ reasonable restriction can be put केते बेले reasonable restriction जेते तुम कोविड टाइम बेले बाहरी बुललोनी जे मोर तो move throughout territory of India अछि बुली थांता पुलिस मारी पिक्चर साइज कर दे थांता बुझियो केते बेले ना जेते हेल्थ मोरालिटी ऊपर आसीबो you can restrict because there is a epidemics act 1897 okay तमे रेस्ट्रिक्ट करियो मूवमेंट को मूव थ्रू आउट टेरिटरी तमे मूव करि परिबो नाही अच्छा तमे ट्राइबल एरिया पळना जाई परिबोनी okay there is a concept called inner line permit north eastern state को देइ छि inner line permit तमे से एरिया को एंट्री करि परिबोनी without the permission from the authority रो परमिशन नै कि तमे एंट्री करिवो okay तो सेति पई मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट्स ओके but it's subject to laws also okay मन रखिबो move to throughout the territory of India inside country रे बुलिबो article 19 ने but right to move abroad and come back right to go abroad and come back बाहर देश को जीवो and आसीबो that is article 19 मन रखिबो right to go abroad and come back it is under article 21 move inside country it is article 19
ओके आर्टिकल 21 को भयंकर बेगर एक्सपांड कर जाइए ओके इट इज द मोस्ट एक्सपांडेड आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 को बहुत सारा एक्सपांड कर जाइए ओके जेंट कि राइट टू नॉइज फ्री एनवायरनमेंट नॉइज फ्री एटमॉस्फेयर पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर राइट टू स्लीप राइट टू मैरी ऑफ इट्स ओन चॉइस राइट टू चूज ऑफ इट्स पार्टनर ओके राइट टू मैरी ऑफ इट्स ओन चॉइस ओके तमे कहा को बाहाबो लव मैरिज करियो कि कोन करियो ओके इट इज अंडर आर्टिकल 21 करे जते तुम कौन कर तुम एगेस्ट तुम जाए कह मो आर्टिकल 21 अच्छे साड़ू चप्पल उड़िले मो दोष ना ओके चप्पल उड़ो है अलग कथा कि झाड़ू उड़ी अलग कथा बट आर्टिकल 21 तुमको राइट्स देइछे राइट टू चूज इट्स ओन पार्टनर तुम पुओ को बाहाबो कि झियो को बाहाबो का बाहाबो इट इज आल्सो अंडर आर्टिकल 21 अंडर ओके एंड राइट टू मूव abroad and come back it is 21 right to move inside the country it is article 19 okay D next article 19E 19E reside any part of the country okay तमे कोनोसी पार्ट रे भी रही परिबो बट इनर लाइन परमिट अच्छी एक्सेप्शन इनर लाइन परमिट तमे से पार्ट रे की रही परिबो नाही ओके सपोज देयर इज एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट ओके तम कॉलोनी भीतर रहउछ विल यू अलाउ टू रिजाइड देयर नो इट इज एक्सेप्शन जदि पब्लिक हेल्थ मोरालिटी ऊपर क्वेश्चन आसी ताल तमे सेटू भगै परिबो स्टेट विल भगैबो तमको इज दैट क्लियर नेक्स्ट मन रखिबो आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए अच्छी बी अच्छी सी अच्छी डी अच्छी ई अच्छी एफ नहीं F is not there. F is not there because it is the right to property कथा कहूँ right to property which has been deleted under 44th Amendment Act 1978. It become a legal right under Article 300A in Part 12 of Indian Constitution. Part 12 of Indian Constitution. Part 12 of Indian Constitution. Clear? F9 next article 19G 19G कौन कहूचे article 19 कौन कहूचे जे practice any profession any profession कौन सी भी profession तमे करि परिबो कौन सी profession तमे करि परिबो you can practice any profession but the professions should be legal हेतु दरकार suppose you are an engineer तम को ऑपरेशन आज करिवि is it possible हां तापे भी तम को क्राइटेरिया थवा दरकार तम क्वालिफाइड डॉक्टर हेतु दरकार ओके suppose you are an engineer ओके तम को लॉयर हे जिवि लॉयर हो लॉ पाठ पढिया पडियो प्रोफेशन जो प्रोफेशन जो टेक्निकल प्रोफेशन तुमको दरकार कि सॉरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन दरकार तुम सेटा डूली क्वालिफाइड अच्छो देन यू कैन टेक द प्रोफेशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए बी बी सी डी ई एफ नहीं जी जाके मैं कहि देली ओके तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 वाला 19 2 रे सब कोन दैछे एक्सेप्शन उरा हम ऑलरेडी तुम कहि साइलेनी एक्सेप्शन तुम ऑलरेडी कहि सारी छी आर भीतर एक्सप्लेन भीतर एक्सेप्शन गुडा जेमति कि मोरालिटी हेल्थ एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एगुडा सब कहि सारी छी ओके तो टेक 30 मिनट्स ब्रेक 30 सेकंड सॉरी 30 मिनट्स 30 सेकंड okay next article 20 protection
in respect of protection in respect of conviction offenses, protection in respect of conviction for offenses, protection in respect of conviction for offenses, protection in respect of conviction for offenses. तार आर्टिकल देखिबा कोन आर्टिकल 20 रो सब क्लॉज 1 कोन कहउचे नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो माने कोन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो माने कोन भल से बुझो। आर्टिकल 20 कहला प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ओके। नो फर्स्ट आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 कोन कहउचे नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ता माने कोन नो रेट्रोस्पेक्टिव, नो रेट्रोस्पेक्टिव, नो रेट्रोस्पेक्टिव बुझो बोल से कौन सी लॉ कौन सी ये को तमे रेट्रोस्पेक्टिव पछु को जाई कि कोन करि परिबो इंप्लीमेंट करि परिबो नाही। सपोज मु कौन सी क्राइम करि छेबे, ओके मु गोटे क्राइम करि छी बुझियला, बट ए क्राइम टाइम बेले एई भला किछि अछि कि जे मते 5 वर्ष जेल दंडादेश मिलिबो, ओके। सपोज 3 वर्ष पळेला तापर तमे कहबो कि नै लॉ चेंजेस हे गला पुणी तुमको नहीं पछरु कोन करा जीवो 10 वर्ष जेल दंडादेश। नो देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव, मन रखिबो को केस रे नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल 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 केस रे यू कैन नॉट गिव रेट्रोस्पेक्टिव और नो एक्सपोज फैक्टर टू द लॉ, बट इन सिविल एंड टैक्स लॉ, सिविल एंड टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिव अलाउड, रेट्रोस्पेक्टिव अलाउड, ओके। सिविल आउ टैक्स लॉ रे तमे टैक्स कोइ परिबो 1997 मसिया रे टैक्स रे इंप्लीमेंट हबो, ओके। दिस लॉ केम इनटू फोर 10 वर्ष तळरु करि परिबो, सिविल लॉ को भी करि परिबो, बट क्रिमिनल लॉ को नो एक्सपोज फैक्टर। ताको माने कहला जा माने होची कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। तो कोन कहला नो पर्सन shall be convicted except for violation of law at that time, से टाइम बेले को लॉ वायलेशन हेची जदी जे पर्यंत करिनी ताकू अरेस्ट करि परिबो नाही कि प्रोटेक्शन दिया दिबो। नो पर्सन शैल बी convicted except the violation of law, exception उडा मन रखिबो क्रिमिनल लॉ रे कोन अछि सिविल टैक्स लॉ रे रेट्रोस्पेक्टिव हेई परिबो, क्रिमिनल लॉ रे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नाही। क्लियर? सेकंड 20 आर्टिकल सब क्लास 2 कोन कहउचे नो डबल जियोपाडी, नो डबल जियोपाडी, नो डबल जियोपाडी, नो डबल जियोपाडी माने कोन कहउचे ना नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस, नो पर्सन शैल बी prosecuted or punished more than once for same offense गोटे ऑफेंस पई ताकू बार बार पनिशमेंट करि परिबो नाही, बार बार पनिशमेंट है करि परिबो नाही। ओके सपोज मु किछ गोटे क्राइम करिछि, मोर किछ भूल होइछि, मु गोटे क्राइम करछि, मते 2 वर्ष दंडादेश मिलिछि, जेल दंडादेश मिलिछि, जेल दंडादेश 2 वर्ष मोर छुटकुरा हला परे कोन जे मते 2 वर्ष परे कोन हला सुनानी हला, मु मते 2 वर्ष जेल दंडादेश हला, तापर मु 2 वर्ष कोन कारागार काटी के आसला परे मु छाती बुलै बुलुछि सपोज गां रे। ओके तो पुणी मते आसी माने ने तू चल चल भूलटा करथला आउ 2 वर्ष पळिया। नो 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 डबल जियोपाडी, no person shall be prosecuted or punished more than once for the same offense, गोटे ऑफेंस पई जणो को तमे बार बार पनिश देई परिबो नाही। ओके ओके नॉलेज पुन छुरी पुरे देकी पुन थरे जीवो। ओके ठीक अछि। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जानि छटा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लिखंतु ता माने को नो पर्सन
accused of any offense, no person accused of any offense, no person shall be accused of any offense, compelled to give witness against him. ओके जन को तुम बाध्य करिपरिबनी ता अगेंस्ट रे से विटनेस दवा लागे सपोज मु अरेस्ट हे गेछि मते तुम बाध्य करिपरिबनी कि जे मु तुम सॉरी मु अगेंस्ट रे विटनेस दवा लागे बाध्य करिपरिबो नै as long as it is third degree करी किछु करिपरिबनी ओके as long as it is not a grave crime ओके जेमति कि तमर एग्जांपल मु कहिबी कि सपोज ए जने के रेप करी कि जाइछि ओके तमे तार आगुर को कौन कहूँ कि ताको के बाध्य करि परिबनी विटनेस दवा लागि बट यू कैन नॉट डू द बायोलॉजिकल टेस्ट ओके तार सीमेन सैंपल नहीं परिबो तार डीएनए सैंपलिंग करि परिबो बट विथ द परमिशन क्लियर इज दैट क्लियर ओके 10 सेकंड ब्रेक नियंतु आगु नोट्स करंतु okay done next article 21 तामाने कोन गला protection of life and personal liberty with privacy protection of life, personal liberty and privacy okay तामाने को no person देखंतु no person or the states cannot take the life states cannot take the life of an individual except procedure established by law तामाने कोन कहूची स्टेट तो तमर प्रोटेक्ट करिवो काण ना लाइफ पर्सनल लिबर्टी विथ प्राइवेसी की ओके डिग्निफाइड लाइफ को तम स्टेट कोन करिवो प्रोटेक्ट करिवो किंतु स्टेट कैन आल्सो टेक योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अनुसार तमर लाइफ को से नहीं परिबो स्टेट नहीं परिबो ओके देरी केबे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पड़े प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लॉ रे को आर्टिकल में मेंशन अछि इट इज आर्टिकल 21 ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देयर इज अ क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जाम ओके ओपीएस रे पड़े ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन ओके प्रीलिम्स रे पचारतला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भीतर चारिटा स्टेटमेंट देतला क्वेश्चन पचारे ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम द what it is from the Japan constitution okay our due process of law is borrowed from the USA constitution okay difference कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ रे कोन हो जदि तो मोटा मोटी देखिबो ओके तार बहुत सारा थ्योरी सरी अछि जेमति कि थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कोन ओके इंदिरा गांधी केस कोन थिला ओके मेनका गांधी केस कोन थिला तो केस तुम दरकार नहीं खाली एतिक मन रख जे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द लॉ रे अछि माने यू हैव टू फॉलो दैट लॉ बट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यू हैव टू अप्लाई योर रीजनिंग पावर दैट इज कांसेप्ट कॉल्ड नेचुरल जस्टिस जेमति बहुत सारा प्रिंसिपल अछि कि तमरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे और नेचुरल जस्टिस रे कोन जे नो पर्सन कैन बी सेंटेंस विदाउट बीइंग हर्ड ओके तुम गला काहा को तुम अरेस्ट करी कि जेल ले पकई परिबनी जे पर्यंत तार सुनानी हेनी नो पर्सन ओके जे पर्यंत गिल्टी प्रूव हेनी
he is innocent. Okay, these are the due process of law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके बहुत सारा प्रिंसिपल अछि तमर दरकार नै थरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश पाइलो क्वेश्चन पचारिबो प्रोसीजर एस्टैब्लिश पाइलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन ये एक्सेट्रा मन रखियो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन यूएसए इज वाइडर दैन इंडिया बिकॉज वी आर फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश पाइलो आ ताकर जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट इज डिफरेंट ताको जुडिशियल रिव्यू कोन सुप्रीम यूएस रो हमर कोन अछि जे पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी विथ जुडिशियल सुप्रीमेसी ताकर पूरा जुडिशियल सुप्रीमेसी अछि ओके तो से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन यूएसए इज वाइडर आमर एटी लेस इज दैट क्लियर आर्टिकल 21 हां क्वेश्चन पचारे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्राइवेट पर्सनल लिबर्टी प्राइवेसी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 जेंति तुम कहली आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट पूरा बहुत वे एक्सपांड करी जेंति राइट टू एजुकेशन 1993 रे कोन कहला राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 तापर 86 अमेंडमेंट 2002 रे अमेंड है कि 21 ए आसिला किन 1993 मसिया सुप्रीम कोर्ट कहितले कि कोन जे राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 1993 रे मन रखियो क्वेश्चन पचार दे पारे 1993 मसिया सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कहितला राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 देन राइट टू मैरी ऑफ इट्स ओन चॉइस राइट टू नॉइज फ्री एनवायरनमेंट राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ओके सबु आर्टिकल 19 अंडर जाउछ even if 31 sorry 39A it is also 19 nalsa dare भी 21 under article कहला ओके जेंति कि तमर ब्रुकलैंड कॉन्फ्रेंस बहुत सारा ब्रुकलैंड 1987 ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब आर्टिकल 21 अंडर जाउछ राइट टू गो अब्रॉड एंड कम बैक राइट टू लाइवलीहुड राइट टू न्यूट्रिएंट्स इट इज आल्सो अंडर आर्टिकल 21 ओके राइट टू इंफॉर्मेशन इज आल्सो अंडर आर्टिकल 21 ओके अच्छा गोटे राइट टू इंटरनेट क्वेश्चन पड़े राइट टू इंटरनेट को आर्टिकल राइट टू इंटरनेट इज अंडर आर्टिकल 19 21 मारिबनी राइट टू इंटरनेट इज अंडर आर्टिकल 19 ओके इंटरनेट न हले मरि जबनी हम इंटरनेट इज ओनली फॉर द एक्सप्रेशन व्यूज एक्सचेंज तो आर्टिकल 19 गोटे केस अनुराधा भासिन केस रे को कहले सुप्रीम कोर्ट कहले कि राइट टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ओके 21 अच्छा प्राइवेसी के बेडाला मन रखिबो न्यूज़पेपर रे 2 दिन तळे थिला आगुरी बहुत भलो न्यूज़ टाटा ओके केस पुट्टस्वामी केस ओके विदाउट आर्टिकल पॉलिटी इज नथिंग ओके ओके तो आर्टिकल सब मन रखियो पड़िबो केसेस गुडा बट जोटा दरकार ओके सब केस रे मन रखिले हजम करिया डिफिकल्ट ना ओके समस्त मु तो मन रखिनी अछि के सब केस जोटा इंपोर्टेंट केस गुडा मन रखछि अच्छा केस पुट्टस्वामी केस रे कोन कहला राइट टू प्राइवेसी काली न्यूज़ रे थिला डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन ओके काली ये न्यूज़ रे थिला तम एडिटोरियल देखिबो दी काली हिंदू न्यूज़ रे थिला ओके केस पुट्टस्वामी केस 2017 रे कोन कहले 2017 रे केस पुट्टस्वामी केस रे कोन कहले जे राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो अंडर आर्टिकल 21 is that clear take 10 second hajam this अच्छा साडो 8 आगे सार दियो आर्टिकल 21 ए ओके राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन 1993 रे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आकु 21 अंडर रे क्लासिफाई करतला किंतु इट हैज बीन एडेड थ्रू 86 अमेंडमेंट 2002 रे सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी पार्लियामेंट अनला राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए ओके केते वर्ष ना 6 रु 14 वर्ष 6 to 14 years okay 6 to 14 years is a fundamental right under article elementary education not higher education it is elementary education okay तो सेति पय पार्लियामेंट came with right to education act 2009 okay done I'm done with article 21 okay next article 22
protection protection against arrest and detention. Protection against arrest and detention. Protection against arrest and detention. Okay, protection against arrest and detention. There are two types of detention. One is preventive detention. Another one is punitive detention. Preventive detention and punitive detention. Preventive detention माने को तमे किसी करिनो, but there is a doubt that you can do anything. Okay, तमे करि पार जोटा कि affect करिवो. Okay, that is preventive. Suppose देखि तो बहुत सारा कॉलेज इलेक्शन पूर्वरु ओके पुलिस आसी किछि लोग उठे नै जिवो, that is called preventive detention. ओके तमर किछि भूल नै, किछि होगे को नै, हां तमे किछि करि पारो मे बी. ओके तम पास्ट रेकॉर्ड से बेला अछि, तमे किछि भी करि पारो. ओके दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. पुनिटिव डिटेंशन है कोन, तमे भूल करिचो, ट्रायल हेलो, देन तम कोर्ट रे प्रोड्यूस करा गला, ट्रायल हेलो, देन तुमको जेल दंडादेश और डिटेंशन मिलला, दैट इज कॉल्ड पुनिटिव डिटेंशन. ओके तो आर्टिकल देखिबा 22 आर्टिकल 22 सब क्लास 1 ने कोन कहूची, नो पर्सन. ओके आर्टिकल 22 सब क्लास 1 में कहूची जे नो पर्सन इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड. Okay, no person shall be detained without being informed. Okay, तमाने कहला तमे जहा को अरेस्ट करछो कोन पई अरेस्ट करछो ताको कहिया पड़िबो, कोन पई अरेस्ट करछो कहिया को पड़िबो. किंतु सपोज तमे कोनोसी एनिमी अलायंस को करूछो. ओके सपोज कोनोसी टेररिस्ट के अरेस्ट करिछो ताको कहबो अरे कोन पई त अरेस्ट करिछ, ताको सपोज यूएपीए रे काबू अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 मन रख केबे क्वेश्चन पचार दे पारे यूएपीए. ओके रिसेंटली बहुत न्यूज अछि, दिल्ली ब्लास्ट केस ठु आरंभ करी गुजरात रीजन जाके भी कोन अछि से 4 जन जो 5 जन डॉक्टर धरा पड़ी जनी माने अरेस्ट होई जनी. तो यूएपी एक्ट बहुत सारा कोन न्यूज रे अछि, तो पचारि पारे ईयर केबे 1967 आस्तला यूएपी एक्ट. ओके तो ताकू को कहबो कि को ग्राउंड रे तमे इन्फॉर्म सॉरी अरेस्ट करछो ताकू इन्फॉर्म करबो नो. तो एति पई आर्टिकल 20 बहुत सारा आर्टिकल अछि ओनली इंडियन सिटीजन भाई, जेमति कि 15 16 19 29 30 आउ सब आर्टिकल बोथ इंडियन सिटीजन फॉरेनर मानो पई अछि. किंतु ए आर्टिकल गुडा कोन जो एनिमी अलायंस को परे इंप्लीमेंट हबने. आर्टिकल 22 इज नॉट एप्लीकेबल और अवेलेबल फॉर एनिमी अलायंस, जो माने टेररिस्ट एग्जांपल पाकिस्तान एक्सेट्रा ताको परे एप्लीकेबल न. ओके तो आर्टिकल 22 सब क्लास 1. नेक्स्ट आर्टिकल 22 सब क्लास 2 कोन कहूची, आर्टिकल 22 सब क्लास 2 कोन कहूची. ओके जो पर्सन को arrested person should be produced before the magistrate within 24 hours excluding मान रखियो excluding travel time को छाड़ी की 24 घंटा भीतर तमे मैजिस्ट्रेट आगे प्रोड्यूस करिवा दरकार. ओके तो ये कौन कहला आर्टिकल 22 सब क्लास 3 कौन कहूचे, ए प्रोविजन जो आर्टिकल 22 सब क्लास 1 प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, जो गुडा तुम आपनो कहि सारी छी, नॉट एप्लीकेबल फॉर enemy alliance or aliens. okay Pakistan terrorist. okay Pakistan country kiye ta कहूचे. okay I am not considering Pakistan as a country. okay it is a rogue state. बुझिए ना. तो these are the articles related to article. okay आउ तीनटा दीटा अछि बट एते भी इंपोर्टेंट नुह, फिर भी मन रखि दवा. ठीक है चलो आर्टिकल सार तो कोई जन सब कहया को छाड़ीबार नै. आर्टिकल 22 सब क्लास 4. ओके आर्टिकल 22 सब क्लास 4 कोन कहूचे,
जदि तुम क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन रखुज क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन रखुज ओके देखी तो जम्मू काश्मीर जिते तुम आर्टिकल करेंट शुण जो पॉलिटी पढ़ुच पॉलिटी इज वेरी टेक्निकल ओके पॉलिटी इज डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक तुम लाइफ डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो तो डायनामिक ओके तो जो पढ़ुच पॉलिटी तो रियल लाइफ न्यूज पेपर सब पढ़ न्यूज पेपर तुम उठेब ओके तो जानी पार एक्चुअल पॉलिटी केम डायनामिक होके पॉलिटी इज नॉट दैट मच ऑफ इजी आपण जति भाबुछनी हां हम एग्जाम रे क्वेश्चन सॉल्व करते जेटा अलग कथा बट इट इज नॉट रियल इजी ओके कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लेंथी ओके जेतल न्यूज पेपर रु कनेक्ट करिवो ना तो इजीली मन रखियो प्रिवेंटिव डिटेंशन जेतल आर्टिकल 370 उठिला ओके तो सेते बेले कोन करा गला जे जम्मू काश्मीर रो बहुत जन जो माने सेपरेटिस्ट लीडर अछनी ताको हाउस अरेस्ट कर रखा त माने हाउस अरेस्ट माने कोन हला ताको डिटेन करा गला प्रिवेंटिव डिटेन कर कारण मे भी किसी केओ सिचुएशन आसी पारे तो सेति पे प्रिवेंटिव डिटेंशन अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन केते मास रखि परिबो ओके हाउ मेनी मंथ्स यू कैन पुट ए पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन केते केते इट इज फ्रॉम 3 months ओके 2 to 3 months बट केते बेले ना तुम गोटे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रा रिकमेंडेशन ले गोटे एडवाइजरी बॉडी गठन करी सपोज तुम मालटा पी देकी गाड़ी चलाउछ ओके तुमको सपोज को पुलिस स्टेशन रे पेट्रोलिंग वाला तुमको धरदेले से भी गोटे डिटेंट ओके से भी डिटेंट तुमको नहीं कि थाना रे बसैला इट इज आल्सो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं तुमको कादरे बाड़े दे पारा एक्सीडेंट का कर दे पारा न निजे पड़ी की मर जाई पारा ओके सफर राती 12टा गोटे मालटा भी गाड़ी चलाउछ ओके तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रहला से सेठी तुमको प्रिवेंटिव 3 मास रे कर तुम निशा छाड़ले तुम छाड़ दो ओके अंडरटेकिंग लिखिकी बापा को फोन करिके नल फाइन नहीं की ओके तुम छाड़ दो दैट इज आल्सो प्रिवेंटिव डिटेंशन बट सेटा 24 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तुम निशा छाड़ला परे तुम निजे चिन्ही पाइला परे तुम छाड़ दो ओके प्रिवेंटिव डिटेंशन दैट इज आल्सो प्रिवेंटिव डिटेंशन बुझियला ओके तो आर्टिकल 22 डन ओके नोट्स कर दियंतु ओके